Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. So again we are back with a new chapter of Understanding History to It's for Grade 7th by Ismat Riaz. Today we are going to read and discuss chapter 3, The Crusade, Renaissance and the Age of Discovery. So let's start. With the fall of the Roman Empire in 476, Europe entered the period known as the Middle Ages or Dark Ages, and many of the great achievements made by the Greeks and the Romans came to be forgotten. There were frequent attacks by warrior tribes like Viking, Huns, and Vandals, who killed, plundered, and destroyed at will. European people lived in constant war, poverty, and hunger, and many of their generations suffered these terrible conditions, especially from the 7th to 10th century. So it's all about the Dark Ages. The Middle Ages in Europe, they were also known as the Dark Ages. All the important knowledge, all the important work which was earlier done by the Greeks and Romans, वो सारा का सारा खत्म हो गया. It was forgotten. It was the time period when Muslims they had their golden age. मुसलमान फ्लॉरिश कर रहे थे, डेवलप हो रहे थे. दूसरी साइड पे यूरोप में डार्क एजेस थी. यूरोप में लैक ऑफ इंटरेस्ट था इन नॉलेज में. यूरोप में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोलैप्स कर गई थी. एंड मैनी ऑफ द पीपल दे लिव्ड इन कॉन्स्टेंट वॉर. हर वक्त वॉर्स होती रहती थी. पीपल दे सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एंड हंगर. और ये टाइम पीरियड था 7th to 10th century. Christianity unites Europe. In Europe, Rome became the center of Christianity and the church became stronger from the 6th century onwards. The Bishop of Rome, the Pope, was considered their leader. Charlemagne, a strong Christian ruler from what is now France, defeated the pagan tribes and also supported the Pope, who crowned him as Holy Roman Emperor in the year 800. Christianity gradually spread through Europe, with most countries following Rome, while Greece and Russia were linked to Orthodox Church in Byzantine. By 1200, Europe was more stable and peaceful, but most of the Christian land, except for Byzantine, were quite backward as compared to the Muslim civilization and the Far East. स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रोम के बारे में कि रोमन एम्पायर इट ग्रेजुअली हैड अ फॉल व्हेन देयर एम्परर दे एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, व्हेन दे converted to Christianity. So Rome, it became the center of Christianity, and church, it became very strong in Rome after the 6th century. The Pope, he was considered their main leader. जो पोप था, जो उनके फादर थे चर्च के, वो मेन लीडर कंसिडर किए जाते थे. चार्लमैग्ने एक क्रिश्चियन रूलर था फ्रांस का. ही डिफीटेड द पैगन ट्राइब्स एंड ऑल्सो सपोर्टेड पोप. चार्लमैग्ने ही वॉज अ क्रिश्चियन रूलर और ये पोप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था. इन्होंने इवन अपनी जो क्राउनिंग सेरेमनी थी वो भी पोप से करवाई थी. पोप ने इनको क्राउन किया था. And Pope was also known as the Holy Roman Emperor. Christianity gradually spread कर रही है यूरोप में, और ग्रीस और रशिया जो है दे आर लिंक्ड टू ऑर्थोडॉक्स चर्च. ऑर्थोडॉक्स चर्च वो चर्च है जिसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो बहुत ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करते हैं. इट वॉज इन बाइजेंटाइन. बाय 1200 यूरोप थोड़ा सा स्टेबल हो गया, थोड़ा सा पीसफुल हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन लैंड, सारा मोस्टली जो क्रिश्चियन लैंड था सवाए बाइजेंटाइन के, वो बहुत बैकवर्ड था, जबकि मुसलमानों के इलाके बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और डेवलप थे. इन द मीन टाइम Islamic civilization reached its zenith. Zenith means height of glory, height of success. During this period, the Muslims took it upon themselves to translate the work of the Greeks and Romans into Arabic and then built upon that knowledge to give the world great scientific and academic progress in geography, chemistry, astronomy, mathematics, physiology,
histography, medicine, and cartography, as well as architecture and art. So यूरोप में डार्क एजेस हैं, मिडल एजेस हैं, दे वर क्वाइट बैकवर्ड. ऑन द अदर साइड मुसलमान अपनी सक्सेस की, अपनी डेवलपमेंट की हाईएस्ट पीक पर थे. मुसलमानों ने प्रीवियस वर्क को ट्रांसलेट किया था ग्रीक और रोमन के अरेबिक लैंग्वेज में, और उसके ऊपर फर्दर रिसर्च और इनोवेशंस की. उसके बाद बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड की वर्ल्ड को अबाउट दी साइंटिफिक एंड एकेडमिक प्रोग्रेस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ, जैसे ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में, हिस्टोग्राफी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. सो ऑलमोस्ट हर फील्ड में मुस्लिम्स दे कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. द क्रूसेड्स दे आर दी वॉर फॉर दी क्रॉस जो क्रिश्चियनिटी का साइन होता है, जो क्रिश्चियंस का साइन होता है. So these are the war for the cross, religious wars. Another development in Europe which has a lasting effect on the Muslim empire was the Crusade, which took place from the end of the 11th century to the end of the 13th century. The Crusades, meaning war of the cross, the Christian symbol, were fought to win Jerusalem back from the Muslims. Jerusalem is a city that is sacred to the Jews, Christians, and Muslims alike. Jerusalem had been conquered during Hazrat Umar's Khilafat, and Christians were allowed to visit their holy places. So basically, Crusades वो वॉर्स थी जो क्रिश्चियंस ने अपना होली लैंड जेरूसलम मुसलमानों से वापस लेने के लिए लड़ी थी. जेरूसलम हज़रत उमर के टाइम पीरियड में फ़तह हुआ था, लेकिन हज़रत उमर ने क्रिश्चियंस को अलाउ किया था कि वो आकर अपनी होली प्लेसेस जो कि जेरूसलम में है उसको विज़िट कर सकें. But in the 11th century, the situation changed under Seljuk rulers who overran Anatolia, and pilgrims by Christians to Jerusalem were disrupted. 11th सेंचुरी तक क्रिश्चियंस अपने होली प्लेसेस को जेरूसलम में विजिट करते रहे, लेकिन 11th सेंचुरी में जब सल्जुक रूलर्स बने उन्होंने क्रिश्चियंस को जेरूसलम में आने से मना कर दिया, और उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई. The Christians in Europe wanted to recover Jerusalem, and in 1095 the Pope urged them to fight for the cross. क्रिश्चियंस उनका रिलीजियस लैंड था, दे वांटेड टू विजिट देयर होली प्लेसेस, तो उन्होंने जेरूसलम को वापस लेने की कोशिश की और उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया उनके पोप ने. कीप वन थिंग इन योर माइंड स्टूडेंट्स कि उस टाइम पे जो रिलीजियस लीडर्स थे लाइक द पोप, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी. हमने प्रीवियस पैराग्राफ में अभी पढ़ा था कि पोप ही वॉज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द स्टेट, वो अपने आप को होली एम्परर भी कहते थे. There were four main crusades. Four crusades हुई थी, four wars हुई थी from 1096 to 1204. The Christians succeeded in 1099 and controlled Jerusalem. 1099 में जो crusade हुई थी उसमें जेरूसलम क्रिश्चियंस के पास चला गया, क्रिश्चियंस जीत गए. उस वक्त तक जेरूसलम क्रिश्चियंस के कब्ज़े में रहा जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी वन इट बैक, जब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा उनसे फ़ाइट करके जेरूसलम मुसलमानों के लिए वापस लिया, और ये हुआ था 1188 में. However, some towns along the Mediterranean coast of Palestine remained under Christian rule. कुछ एरिया फिर भी क्रिश्चियंस के पास थे. The later crusades were less about religion and more about conquering and ruling the territories gained by the crusade. शुरू में स्टार्ट ये रिलीजियस रीजन के लिए हुई थी, बट लेटर इट्स ऑब्जेक्टिव चेंज फ्रॉम रिलीजन टू कॉन्करिंग द लैंड, फ्रॉम कॉन्करिंग द टेरिटरीज. एक ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, अपना लैंड एक्सपैंड करने का ऑब्जेक्टिव आ गया. Eventually, in the early 14th century, the Mamluk ruler of Egypt won back the remaining coastal town of Anatosh and Acre, besides other territories. 14th century में this area was again in the hands of the Muslims. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी जेरूसलम की इम्पोर्टेंस. जेरूसलम इट्स अ एरिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी और ज्यूज़ के लिए भी. अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर ज्यूज़ रहते थे. दिस एरिया इट वाज
in the hand of the Jews के अकॉर्डिंग दिस एरिया इज़ देयर होली लैंड और इनको गिफ्ट किया था बाय देयर गॉड्स। जब क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि क्रिश्चियनिटी यहीं से जेरूसलम से स्टार्ट हुई थी। यही एरिया था जहाँ पे क्राइस्ट की, हज़रत ईसा की बर्थ हुई, क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई और उसके बाद क्रूसिफिकेशन जो हज़रत ईसा को क्रूसिफाइड किया गया था वो भी इसी एरिया में हुआ था। तो इस वजह से क्रिश्चियंस के लिए भी इस एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्रिश्चियनिटी का स्टार्ट हुआ तो ज्यूज़ को यहाँ से निकाला गया, यहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियंस आ गए। ये एरिया मोस्टली क्रिश्चियंस के पास था, नॉन मुस्लिम्स के पास था टिल द टाइम पीरियड ऑफ हज़रत उमर। हज़रत उमर के टाइम पीरियड में बहुत से इलाके फ़तह हुए, इस्लामिक एम्पायर एक्सपैंड हुआ एंड दिस एरिया वाज वन ऑफ देम। हज़रत उमर के बाद ये एरिया मुसलमानों के रूल में रहा सल्जुक के टाइम्स तक। सल्जुक्स ने कुछ रूल्स को चेंज किया और क्रिश्चियंस को इजाज़त नहीं दी कि वो आकर अपनी होली प्लेसेस को विज़िट कर सकें। जिस तरह मुसलमानों की सिग्निफिकेंस थी, रिलीजियस इम्पोर्टेंस थी इस एरिया की, इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी इस एरिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। लेकिन सल्जुक रूलर्स ने क्रिश्चियंस को अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से क्रूसेड स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से आपस में वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। इनिशियली क्रिश्चियंस जीत गए बट अगेन सलाहुद्दीन अयूबी के बाद दिस एरिया वाज अगेन इन द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स। I hope it's now clear the importance of Jerusalem. So now let's move towards the next one. The Renaissance. As a result of the interaction between the Europeans and the Muslims, there was an exchange of knowledge, especially from the east to the west, which resulted in Renaissance. Renaissance का मतलब क्या है? It's here. The rebirth of learning, knowledge and progress in Europe. Renaissance, it's a French word जिसका मतलब है rebirth of learning. यूरोपियंस और मुसलमानों के इंटरेक्शन से एक्सचेंज हुई नॉलेज, पर्टिकुलरली द फ्लो वॉज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट मुस्लिम्स का एरिया है, वेस्ट यूरोपियन एरिया है। मुस्लिम्स एरिया से वेस्ट की तरफ नॉलेज का, लर्निंग का फ्लो हुआ एंड इट लेड टू रेनेसां। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ ऑफ लर्निंग, दोबारा से लर्निंग स्टार्ट हो रही है, दोबारा से नॉलेज और प्रोग्रेस स्टार्ट हो रही है यूरोप में। पीपल turned again to the art and technology of the ancient Greeks and Romans. दोबारा से ancient Greeks और Romans की आर्ट और टेक्नोलॉजी की तरफ लोग वापस जा रहे हैं। Made available by the Arabs and Muslims through translation. Arabs और मुस्लिम्स ने ग्रीक और रोमन का काम ट्रांसलेट किया था, मुसलमानों ने उसके ऊपर फर्दर रिसर्चेस की थी, फर्दर उस काम को डेवलप किया था, which improved their living condition. The Renaissance. French adapted from Latin meaning rebirth. It's about the term Renaissance. ये एक French word है जो कि Latin ज़बान से आया है और इसका मतलब है rebirth of learning. It started in Italy around 1350 and continued up to 1600. It spread throughout Europe and became the bridge between the medieval or Middle Ages and the modern age that followed it. So basically Middle Ages और Modern Ages के दरमियान का जो टाइम था जिसने इस गैप को फुलफिल किया वो Renaissance था. Great advances were made in several fields such as geography, astronomy, chemistry, physics, mathematics, medicine, manufacturing and engineering. अब बहुत सारा काम डिफरेंट फील्ड में स्टार्ट हो गया है, जैसे ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में. लियोनार्डो डा विंसी, द रेनेसां मैन. वी आर टॉकिंग अबाउट रेनेसां, वो टाइम पीरियड जो डार्क एजेस के बाद आया है और मॉडर्न एजेस से पहले आया. इस टाइम पे ना डार्क एजेस जैसी कंप्लीट इग्नोरेंस है और ना ही मॉडर्न एजेस जैसी डेवलपमेंट है. उस टाइम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लियोनार्डो डा विंसी ने किया. एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम लियोनार्डो डा विंसी थे. One of the greatest inquiring mind of the Renaissance was that of the Leonardo da Vinci, a native of Florence, the center of Renaissance in Europe. He was a
पॉलीमैथ। पॉलीमैथ हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। पॉलीमैथ का मतलब होता है अ पर्सन हु हैड कमांड ओवर सेवरल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। जैसे ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, एनाटॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर एंड इन्वेंटर. Leonardo, he became famous as a painting and his best known works are the Mona Lisa and the Last Supper. जिस चीज़ों ने लिनार्डो डा विंसी को फेमस किया वो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो थे वो मोनालिसा की पेंटिंग एंड दी लास्ट सपर. He observed nature very carefully and made detailed drawings of his findings with notes covering 4,000 pages. Leonardo was fascinated by the human body and its miraculous working. His drawings include the human frame in skeleton, from the muscles trying to work out how the body worked. He even designed a flying machine with revolving paddles as he saw the possibility of human flight. He worked on design for a tank and a helicopter as well as several ideas for the other object. Thus, Leonardo symbolizes the spirit of learning and intellectual curiosity of the Renaissance. मेन जो कंट्रीब्यूशन था लिनार्डो का इट वाज इन द फील्ड ऑफ ड्राइंग एज वेल एज ही मेड द ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन फ्रेम, ह्यूमन स्केलेटन, किस तरह से ह्यूमन बॉडी मूव करती है, वर्क करती है. इवन ही डिज़ाइन अ मशीन विथ पैडल्स. पहली दफ़ा किसी ने ऐसी मशीन, ऐसी फ्लाइंग मशीन डिवाइस की जिसके पैडल्स थे. एज he saw the possibility of human flight. It was to some extent the modern day helicopter or the aeroplane. इसीलिए हम लिनार्डो को कहते हैं कि he symbolizes the spirit of learning and intellectual curiosity of the Renaissance. Michelangelo. Michelangelo was another Renaissance artist with versatile skills that included art, painting, architecture as well as poetry. He too came from a place near Florence and later worked in Rome. He is best known for his skill as a sculptor and for his paintings of the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican in Rome. Michelangelo was a famous artist not only in his lifetime but is also called the greatest artist of all times. So, एक और Renaissance man, एक और Renaissance artist Michelangelo था, who was famous अपनी पेंटिंग्स, अपने आर्ट और आर्किटेक्चर की वजह से. जस्ट लाइक लिनार्डो डा विंसी, ये भी फ्लोरेंस से आए थे, विच इज़ एन एरिया इन यूरोप, लेकिन बाद में इन्होंने रोम में काम किया. इनके मेन जो काम थे जिसकी वजह से फेमस हुए वॉज हिज पेंटिंग्स ऑन दी सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल. And Michelangelo, he was a famous artist not only in his lifetime but after his death as well. Other than these, there were scholars and scientists like Galileo and Copernicus who studied astronomy and put forward logical and correct theories about the solar system and the movement of the planets. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी गैलीलियो के कंट्रीब्यूशन के बारे में. गैलीलियो ही वाज अ पर्सन, ही वाज एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने बताया कि सन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, नॉट द अर्थ. पहले लोगों का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है, लेकिन गैलीलियो ही करेक्टेड देम. उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया कि नहीं, इट्स द सन. इसके साथ साथ गैलीलियो ने आइडेंटिफाई की द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स ऑन दी मून, के मून पर भी, चांद पर भी देयर आर माउंटेन्स. इसके अलावा ही ऑल्सो टोल्ड दैट देयर आर मून्स ऑन जुपिटर. जुपिटर पे भी मून की प्रेजेंस के बारे में गैलीलियो ने बताया. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कॉपरनिकस, कॉपरनिकस भी एक एस्ट्रोनॉमर है और इनकी जो मेन थ्योरी है इट्स अबाउट द सन एंड द अर्थ. ही टोल्ड अस दैट सन इज़ एट रेस्ट. सन एक जगह पे स्टेगनेंट है, मूव नहीं करता, वेयर एज अर्थ revolves around the sun, which is an important theory of astronomy. Renaissance changes Europe. As a result of the interaction with the Muslim world, Portugal produced experts in mathematics, cartography, and naval technology.
The Roman numeral system was replaced by the decimal system, and the invention of algebra allowed more advanced mathematics. The discovery of the paper making and the invention of printing press, brought by the Arabs from China and further refined by Gutenberg, made books and information more easily available. A large number of Greek and Arabic works on medicine, the science, and philosophy were translated and distributed throughout Europe. Aristotle's rational and logical approach to knowledge influenced the scholars at upcoming universities in Europe, which were absorbing and spreading the new knowledge during the Renaissance. सो रेनेसा में मेन काम ये हुआ था कि नॉलेज ने स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। आपस में डिफरेंट नेशंस का इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से नॉलेज स्प्रेड कर रही है। फिर इट वाज अ टाइम पीरियड व्हेन देयर वाज द डिस्कवरी ऑफ पेपर मेकिंग एंड इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। पेपर मेकिंग और प्रिंटिंग प्रेस के बाद ये प्रोसेस और ज़्यादा स्पीड अप हो गया और इम्पॉर्टेंट बुक्स और इंफॉर्मेशन ईजीली अवेलेबल थी। ऑलमोस्ट all of the people they can get them. The age of discovery. The intellectual curiosity led to the exploration of the then known world and the discovery of the unknown world. Intellectual curiosity की वजह से जो चीज़ें उनको पता है, जो चीज़ें जानते हैं उसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और अननोन वर्ल्ड को जिसके बारे में नहीं जानते उसे डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल इदरीसी's मैप एंड नोट्स इंस्पायर्ड लैंड एंड सी एक्सप्लोरेशन। अल इदरीसी के मैप्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। अल इदरीसी के मैप 300 ईयर्स तक यूज़ होते रहे जिसकी वजह से लैंड और सी एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। There was also great involvement in shipbuilding and the use of quadrant. Quadrant वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से हम पोजीशन के बारे में पता करते हैं इन सी। जब शिप सेल कर रही होती हैं, ट्रैवल कर रही होती हैं समंदर में, तो वहाँ पर पोजीशंस के बारे में, एंगल्स के बारे में जानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ क्वाड्रेंट। एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें डिफरेंट एरियाज़ का, साइजेस का, डिस्टेंस का बताता है बिटवीन दी प्लैनेट्स एंड दी स्टार। ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेट कर रहा है। इट टेल अस अबाउट दी प्लैनेट्स एंड स्टार्स। क्लॉक्स and the magnetic compass. Magnetic compass, it's also used in navigation. It's also used in traveling through sea. A magnetic compass, mainly this was discovered by the Chinese, which was a great help in navigation. इन सारी चीज़ों की वजह से traveling, moving through sea, it became quite easy. These advancements led to the age of discovery in Europe as well as in Muslim countries. इन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की वजह से, इन इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट की वजह से मुस्लिम्स कंट्रीज़ और यूरोप की तरफ डिस्कवरी की एज स्टार्ट हो गई। अमंग दोज हु ट्रेवल्ड फार एंड वाइड बाय लैंड रूट वर मार्को पोलो, हिज फादर एंड हिज अंकल, अल-बैरूनी एंड मोस्ट फेमसली इब्न बतूता। जो मेन ट्रैवलर्स थे उस टाइम के, इट वाज मार्को पोलो एंड हिज फादर एंड हिज अंकल। इसके अलावा मुस्लिम्स में अल-बैरूनी एंड इब्न बतूता। अल-बैरूनी और इब्न बतूता के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया. There were economic reasons too for these exploration. One of them was to find an alternative sea route for trade with the East, which the Muslims had dominated so far. The trade in spices was very profitable as they were used as preservatives and to disguise the taste of poorly preserved food, as well as for medicinal purposes. Portuguese, Italian, and Spanish explorer looked for the trade routes to Indian Ocean as the East was an important source of goods, especially cotton, silk, indigo, and spices. It goes to the credit of the Portuguese to have been the first European to sail directly from Europe to India. इंडिया का सी रूट डिस्कवर हुआ। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इंडिया बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंडिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इंडिया हैड। इंडिया को उस टाइम पे गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सुनहरी चिड़िया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे जैसे कॉटन, सिल्क, इंडिगो एंड स्पाइसेस।
उस टाइम पे स्पाइसेस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्पाइसेस एक तो टेस्ट को इन्हांस करने के लिए यूज़ होते हैं, अलॉन्ग विद इट दे हैव दी मेडिसिनल वैल्यू। बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है स्पाइसेस की, और इसी वजह से द यूरोपियंस दे गॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। Portugal leads in exploration. By the 15th century, Portugal, a small country to the west of Spain, had developed some of the best ships and navigational techniques in Europe, which improved trade by sea. Prince Henry of Portugal, known as the Navigator, was very interested in ships and navigation. And he played a major role in organizing the voyages. Voyages का मतलब होता है जो सी के थ्रू हम जर्नी करते हैं, जर्नी बाय सी. The Europeans, particularly the Portuguese, wanted easier trade routes to the east for its goods and silver and its spices, which sold for huge sum in Europe. Land routes were long and dangerous. Besides, they had to pay taxes to the mainly Muslim kingdoms. They had to cross to get to east. So basically, सी को, ट्रेड रूट्स को, शिप्स को डेवलप करने का एक मेन रीज़न अवॉइड करना था टैक्सेस को जो उन्हें मुस्लिम्स को पे करना पड़ते थे जब वो मुस्लिम कंट्रीज़ को विज़िट करते थे, उनको क्रॉस करते थे. दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न डेंजर से बचना था. और थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न लैंड रूट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉन्ग रूट्स, इन ऑर्डर टू अवॉइड डेंजर एंड द टैक्सेस, द यूरोपियंस दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर ट्रेड बाय सी, देयर वॉयजेस. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पोर्चुगल ने. पोर्चुगल जो एक छोटा सा कंट्री है स्पेन के पास. पोर्चुगल का जो रूलर था, जो किंग था प्रिंस हेनरी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में. उसको द नेविगेटर भी कहा जाता है. ही वॉज इंटरेस्टेड इन शिप्स एंड नेविगेशन एंड प्लेड अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग देम. These explorers took over from the Italian and Spanish to find trade routes to the Indian Ocean, as the East was an important source of trading goods, especially for cotton, silk, indigo, and spices. So, Portuguese सबसे आगे निकल गए इटालियन और स्पेनिश से भी ट्रेड रूट फाइंड करने में, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन का, बिकॉज दे वांटेड टू गेट कॉटन, सिल्क, इंडिको एंड स्पाइसेस. फाइनली in 1488, Bartolomeo Diaz rounded to Cape of Good Hope. Cape of Good Hope ये है the southern most tip of the African continent and discovered the Indian Ocean. So it was Bartolomeo Diaz who discovered the Indian Ocean. However, he turned back without going further east. लेकिन वो Cape of Good Hope के बाद वापस चला गया, वो उससे आगे further east की तरफ नहीं गया. He was followed by Vasco da Gama, who set up sails in 1497 to find Christians and spices in the Indies under the patronage of King Manuel I of Portugal. इसको फॉलो किया था वास्को डा गामा ने, जिसने फर्दर सेल किया, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू फाइंड क्रिश्चियंस एंड स्पाइसेस इन इंडीज. और ही केम फ्रॉम Portugal. The capital of Portugal, and sailing southward from Portugal along the African coast and round the Cape of Good Hope, he reached Calicut on the eastern coast of India. So Vasco da Gama, he was the first one, सबसे पहला यूरोपियन था जो इंडिया आया in 1498. He put up at Calicut, an important trading center of southern India. One of the stone pillars he had brought with him from Portugal to prove that Portuguese were the first European nation to come to India. Vasco da Gama was the first European to sail directly to India. His adventure led to many voyages further east by other. So, Vasco da Gama ने फॉलो किया बार्टोलोमियो डियाज को और इंडिया तक पहुँचे. इंडिया सबसे पहले वास्को डा गामा आया, who was considered the first European in India. The discovery of the continent of America. In 1492, Christopher Columbus sailed westward to find an alternative route to India.
इंडिया उस टाइम पे गोल्डन स्पैरो था, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, सो मेनी पीपल, मेनी यूरोपियंस, दे वर ट्राइंग टू रीच इंडिया, और उनमें से एक क्रिस्टोफर कोलंबस भी था। क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऑल्टरनेटिव रूट फाइंड करने की कोशिश कर रहा था इंडिया पे, not knowing about the landmark of the North and South American continent. So Columbus, he was trying to get to India. By sailing west, Columbus thought he could reach the Indies, meaning India, the Spice Island, and China more easily than by going east. कोलंबस ने वेस्ट की तरफ सेल करना शुरू किया। उसे लगता था कि इस तरह वो ज़्यादा इजीली इंडिया पहुंच जाएगा, इंडिया जिसे हम उस टाइम पे स्पाइस आइलैंड भी कहते थे, बजाय इसके कि वो ईस्ट से जाए। सो उसने प्रेफर किया वेस्ट से जाना। बहुत ईयर्स तक, सेवरल ईयर्स तक ही ट्राइड टू गेट दी फंड्स, एंड फाइनली उसकी हेल्प की किंग फर्डिनेंड एंड क्वीन इजाबेला, जो कि स्पेन के रूलर्स थे, एंड दे प्रोवाइडेड हिम विथ 3 शिप्स टू मेक द जर्नी, और उसे 3 शिप्स प्रोवाइड की ताकि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करे। In 1492, Columbus set across the Atlantic Ocean, and when he reached land after a month at sea, he thought it was India. 1 month की वॉयज के बाद, 1 month सी में ट्रेवल करने के बाद जब वो लैंड पे पहुंचा तो उसे लगा कि ये इंडिया है। Hence the island where he landed are called West Indies and the inhabitants were called West Indians. वो जो लैंड जहाँ पे वो पहुँचा था उसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाता था, और वहाँ के इनहेबिटेंट्स, वहाँ के रहने वाले अपने आप को वेस्ट इंडियंस कहते थे। 10 years later, another Portuguese explorer, Amerigo Vespucci, confirmed that this landmark was not India but a new continent, which was named America after him. स्टार्ट में उसे इंडिया ही समझते रहे, लेकिन 10 ईयर्स के बाद एक और पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने कंफर्म किया कि वो लैंडमार्क इंडिया नहीं बल्कि एक न्यू कॉन्टिनेंट है, और उसको फिर अमेरिका का नाम दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन 476? The fall of the Roman Empire, it had a very negative effect, particularly on Europe. The Europe entered the Middle Ages, which are also called the Dark Ages, and many great advancements made by the Greeks and Romans, they came to an end. It was the time period when there was no interest in knowledge and there was collapse in the law and order situation. 2. What were the Crusades and what was their effect on both Europeans and Muslims? Crusades mean the war for cross. They were the wars between the Christians and the Muslims, and they had a great effect on the European civilization. It led to the development in the European civilizations, and the Europeans, they expanded in trade and scientific research. Question number 3. Why is Leonardo da Vinci a good example of the Renaissance? Leonardo da Vinci, he is known as the Renaissance man because of his knowledge. He was a polymath, had command over different field of study. Leonardo, he was an innovative thinker, and his ideas led to the modern development. Question number 5. What is meant by the age of discovery? Which 3 factors make this happen? Age of discovery, this is the age when new areas and new lands were discovered. The 3 factors that made this happen was Al-Idrisi's maps and notes. Secondly, improvement in shipbuilding and the use of quadrants, astrolabe, clocks, and magnetic compass. Number 6. Why was the discovery of a sea route to the east important? The discovery of a sea route to the east was important because the land routes were long and dangerous. Besides that, they had to pay taxes to the mainly Muslim kingdoms they had to cross to get to the east. Number 7. Explain the work done by the Portuguese for trade between east and west.
Portuguese explorer, they took over from Italian and Spanish to find trade routes to the Indian Ocean. One of the Portuguese sailor, Bartolomeu Dias, he discovered the Indian Ocean, but he turned back without going further. He was followed by another Portuguese sailor, Vasco da Gama, who set sail to find Christians and spices in the Indies, and he was the one who came to India. He was the first European to came to India. Write a note on the achievement of Vasco da Gama and Ferdinand Magellan. So Vasco da Gama, he was a Portuguese sailor who set sail in 1497 to find Christians and spices in the Indies. He set out from Portugal and sailed toward south. Then he reached Calicut on the eastern coast of India in 1498. Ferdinand Magellan, he was a Portuguese explorer who first sailed round the world. He set out in 1519, and after crossing the Atlantic Ocean, he went further south around the tip of the South American continent to the Pacific Ocean. This strip of the sea further south that connect Atlantic to the Pacific was named after him, Magellan Strait. Question number 9. How did Christopher Columbus discover the Indies? Christopher Columbus discovered the Indies by sailing west. Columbus thought he could reach Indies, meaning India, the Spice Island and China more easily by going east. After several years of trying to get fund, he was helped by King Ferdinand and Queen Isabella of Spain. In 1942, Columbus set across the Atlantic Ocean, and when he reached land after a month at sea, he thought he was at India. As the people of that land, they called themselves West Indians, and the area was called West Indies. After 10 years, another Portuguese explorer, he confirmed that the landmass was not India but a new continent. वेल स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, हम यहीं स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे. इस चैप्टर में कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.